So hello everyone. Today I am going to discuss the application part of derivatives. Already we have studied about differentiability as well as differentiation. Okay, we have solved many questions or different types of functions, how to find the derivatives of inverse trigonometric function, or you can say logarithmic function, exponential function, parametric form. Even we have discussed about the second order derivative also in the last class. Now today I am going to discuss the application part, that is called AOD, application of derivatives. तो ये application part में मतलब derivatives का क्या क्या applications है? The first one is rate measure. Rate measure. We will discuss today about this rate measure. क्या होता है actually rate measure? ठीक है? This is the first application. Second one is increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions means using the concept of derivative, how can we find at what interval the function is increasing or at what interval the function is decreasing. So by using the concept of derivatives. Okay, then will come the most important one, tangents and normals. Tangents and normals मतलब tangents normals का questions using the concept of application how to solve. और ये जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या बोर्ड एग्जाम हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ओके, नेक्स्ट एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस. एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है. जैसे कि हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके ये सब का वैल्यूज लाइक 35.7 ये सब का वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, वी कैन फाइंड इन अदर वे ऑल्सो, बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑल्सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ वैल्यू. ओके, सो दिस वन इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन. नेक्स्ट, the last one, this one is also one of the important part, that is maxima and minima. Okay, maxima and minima. Number 3 and number 5, these two are the most important purpose for objective purpose as well as for subjective. ठीक है, नंबर 3 और नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 1, 2 और 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 and 5. ओके, सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेट मेजर. ओके, रेट मेजर. रेट मेजर क्या होता है, रेट मेजर का क्वेश्चंस कैसा होता है, और डिराइवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे वो रेट मेजर का क्वेश्चन सॉल्व करना है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ओके, so first of all you should know about the meaning of derivatives. Derivatives क्या होता है? Suppose if I write one function y is equal to f of x, and if you differentiate the function with respect to x, you will get the value of dy by dx. This is equal to f dash of x, yes or not? If y is equal to f of x is one function, and if you differentiate this function with respect to x, then you will get dy by dx is equal to f dash of x. Now what's the meaning of this dy by dx? The meaning of this dy by dx is rate of change of y with respect to x. Okay, the meaning of dy by dx is rate of change of y with respect to x. Here two variables are there, yes or not? In the numerator y is there, it is a variable. In the denominator also another variable is there, that is x. Out of these two, one is dependent variable, another one is independent variable. This one is dependent variable.
this is dependent variable and this one is independent variable. Okay, dy by dx में जो न्यूमरेटर में है वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड an independent variable. Okay, the meaning of dy by dx is rate of change of y with respect to x. This is called dy by dx, the meaning of differentiation. Right now, rate measure is what? Rate of change of quantities. Rate measure, or you can say rate of change of quantities. Rate of change of quantities, same meaning only, rate measure or rate of change of quantities. If the two variables, listen carefully, okay, I'm explaining the meaning of rate of change of quantities, or you can say rate measure. If the two variables, say x and y, are varying with another variable, say t, small letter t. Once again I am repeating, if x and y, if the two variables x and y are varying with another variable, say t, that is say x is equal to f of t and y is equal to g of t, then dy by dx is equal to, can be written as dy by dt by dx by dt. Yes or not? If the two variables are varying with another variable, say t, like one function say f of x equal to f of t and y is equal to g of t, then dy by dx. क्यों आ गया यहाँ पे dy by dx का कॉन्सेप्ट? बिकॉज द मीनिंग ऑफ dy by dx इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. और मैं तो वही टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज with respect to something. So dy by dx means the same meaning only, rate of change of y with respect to x. So to find the value of dy by dx, you have to apply chain rule, that is dy by dt by dx by dt. Already we have studied this part in the derivative of parametric form. Yes or not? Okay. So to find dy by dx, we have to use chain rule. Yes, that is the rate of change of y with respect to t by the rate of change of x with respect to t. Okay, dy by dx means what? Rate of change of y, with respect to x. And to find the value of this rate of change of y with respect to x, what you have to do? You have to find the value of rate of change of y with respect to t divided by rate of change of x with respect to t. That's it. It is very simple only. Rate of change of quantity, the first application of derivative, or you can say rate measure. क्या है concept? dy by dx, which means rate of change of y with respect to x, वही फाइंड आउट करना है. फिर से मैं बोल रहा हूं, y क्या है? इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, whereas x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. डिनोमिनेटर में जो होता है उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है. राइट? So this is all about the meaning of rate of change of quantities, or you can say rate measure. Right? Now I am going to discuss a few examples related to this topic. This is the subtopic which is called rate measure, or you can say rate of change of quantities. Okay? So let us discuss a few questions related to that rate measure. The first question is, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है क्योंकि कुछ फॉर्मूला जो ऑलरेडी क्लास 8, 9 और यू कैन से 7, 8 में भी यूज करके आए हम लोग मैथ्स में, ठीक है, वो सब फॉर्मूला भी अभी जरूरत पड़ेगा.
पढ़ सकता है। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, वो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, then only you can solve this question. So read the next part. How fast is the surface area increasing? देखो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम के बारे में, क्यूब का सरफेस एरिया के बारे में बोला गया है। तो इसके लिए, इसलिए मैं बोला क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, सो द हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 centimeter. How fast is the surface area increasing? कितना fast increase होगा surface area when the length of an edge, सबको पता है इसका मीनिंग, edge, when the length of an edge is 12 centimeter. ठीक है, जब edge का लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा तब कितना फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। वेदर द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट डजंट मैटर, लेकिन जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज यहां पे जो दिया गया है वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किसका वैल्यू है ये, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता तो वो नेगेटिव वैल्यू होता, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, सो देखो लिखना कैसे है, कहां से शुरू करना है, वो सब अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं। लेट V be the volume and S be the surface area of a cube. Okay, let V be the volume and S be the surface area of a cube. Let X be the length of an edge, EDGE. Since here the value is given when the length of an edge is 12 centimeter, so that's why I consider that the X be the length of an edge of the cube. Okay, so since V be the volume of the cube, therefore V is equal to X cube. Yes or not? मैं ए लेंथ का, सॉरी एज का लेंथ क्या लिया, x लिया, तो फिर v इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज एक्स क्यूब। सिंस s इज द सरफेस एरिया, सो s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला है 6x स्क्वायर। x क्यों लिखा, बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड x इज द लेंथ ऑफ एन एज। जो वेरिएबल कंसिडर किया वही लिखना है। इफ यू यूज टू टेक a, small letter a, say a be the length of an edge, then you can write a cube and here 6a square also. जो फॉर्मूला है वही लिखना है। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो फॉर्मूला लिखा मैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। यू हैव टू यूज दिस टू फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दिस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किसका वैल्यू है ये, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है, सो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यूनिट देख के लिखना पड़ेगा, क्या दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम का यूनिट होता ही है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, राइट। तो ये हो गया V पर सेकेंड। सेकेंड, मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, राइट। सो गिवन dV by dt which is equal to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन में ही हिंट दिया रहता है क्या क्या किसका किसका वैल्यू दिया गया है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब वी नो इट इज V पर सेकेंड। सेकेंड तो टाइम का यूनिट होता है, सेकेंड दिया रहेगा, मिनट भी दिया रह सकता है, सो वो टाइम का यूनिट। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर dV by dt is equal to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। So since we know the value of V, therefore
d by dt of x cube. This is the value of v, which is equal to 8. So differentiation of x cube with respect to t is 3x square into dx by dt. This is equal to 8. Or we can write it as dx by dt is equal to 8 by 3x square. यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए. ओके, dx by dt का वैल्यू मिला. लेकिन अभी फाइंड आउट क्या करना है. नाउ रीड द सेकेंड लाइन. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इसका मतलब dv by dt क्वेश्चन में दिया गया है. अभी फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. मैं बोला था वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जस्ट यू हैव टू चेक द यूनिट प्रॉपर्ली. क्वेश्चन में जो यूनिट दिया गया है. सो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, क्योंकि कुछ किसी के ऊपर डिपेंड होके वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ना. रेट मेजर मीन्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब सरफेस एरिया इनिशियली जितना था अभी चेंज होगा. इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज होगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब भी चेंज हो रहा है. तो सरफेस एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग ना. dy by dx का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है मतलब थोड़ा सा तो चेंज होगा. तो सरफेस एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. ओके, so how fast is the surface area is increasing, which means you are asked to find the value of ds by dt. Surface area is increasing or decreasing with respect to time. Since here you are asked to find increasing, so that's why I have written here ds by dt. Okay, so from this equation we can find ds by dt. So differentiate both sides with respect to t. So differentiation of 6x square is 12x into dx by dt. This is equal to 12 into x into the value of dx by dt here. Already we have calculated, that is 8 by 3x square. Okay, this is ds by dt, but still it is unknown. Yes or not? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू तो अभी तक नहीं बैठाया गया है. अभी x का वैल्यू क्या है? What is this x exactly? X is the length of an edge. So how fast the surface area is increasing? When the length of an edge is 12 centimeter. That means when the value of x is 12 centimeter, then find the value of ds by dt. ठीक है, क्वेश्चन यही है कि when x is equal to 12 centimeter, then find ds by dt. So therefore ds by dt when x equal to 12 centimeter, I can write like this also. Okay, you can write like this also. So put the value of x, that is 12 into 8 by 3 into 12 square. So 12 square will be cancelled. This is equal to 8 by 3. But one important point, don't forget to write the unit ds by dt. इसका यूनिट क्या होगा? जैसे वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा है, सो ds by dt का क्या होगा? 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ds by dt. So how fast the surface area is increasing? When the length of an edge is 12 centimeter, 8 by 3 centimeter square per second. So in this way you have to solve this type of questions. Okay, इसीलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है. These are word problems, और ये रेट मेजर से वर्ड प्रॉब्लम्स ही आता है. ठीक है, तो इसीलिए ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ. 2-3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने से फिर थोड़ा क्लियर होगा. उसके बाद खुद सॉल्व करना है, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा. So now the next question is the radius. RAD means radius. The radius of a circle is increasing uniformly at a rate of 3 centimeter per second. देखो, the radius of the circle is increasing at a rate of 3 centimeter per second. So let R be the radius. So which means dr by
dt is given, this is equal to 3 centimeter per second. कैसे पता चला कि dr by dt? Because look at the unit here, centimeter per second. Second time का unit है, so that's why I can write dr by dt is equal to 3 centimeter per second. क्या find out करना है? Find the rate. रेट मेजर का क्वेश्चन है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या रेट ऐसा ही क्वेश्चन होगा. सो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग. लिसन केयरफुली. एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग मतलब एरिया पहले जितना था अभी चेंज होगा. इंक्रीज हो रहा है मतलब थोड़ा चेंज होगा, लेकिन जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? लिसन अगेन. The area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. अभी radius के बारे में दिया गया है. जैसे last question देखो, how fast the surface area is increasing when the length of an edge is 12 centimeter. ये दिया गया था. अभी दिया गया है find the rate which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. So means you are asked to find the value of dA by dr if I consider A be the area of the circle. That means you have to find dA by dr. अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि why not dA by dt? क्योंकि अगर एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है तो r का यूज कहां पे होगा? जो रेडियस का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उसका यूज ही तो नहीं होगा. पर देख सकते हो, मैं जब पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके दूंगा उसके बाद देख सकते हो क्यू डी ए बाई डी आर लिखा गया है. सो सिंस डी आर बाई डी टी इज गिवन हियर, व्हाट इज रेडियस ऑफ ए सर्कल? रेडियस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? रेडियस, एरिया, ये सब कुछ तो जानना पड़ेगा. रेडियस एरिया अगर नहीं का मतलब आइडिया नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा. रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? We know area of a circle is equal to pi r square. Yes, area of the circle is equal to pi r square. And what is the radius of a circle? Radius of a circle क्या होता है? Radius of a circle is, see here, dr by dt is equal to 3 centimeter per second. पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं. dA by dr, since a is equal to pi r square, since a is equal to pi r square, now if you differentiate this one with respect to r, what will be then the value of dA by dr? Pi is constant, right here pi. What is the differentiation of r square? Twice r. Yes or not? Here no need to write then dA by dr by dt. First of all, पहले तो नहीं लिखना है, पहले तो नहीं लिखना है. Yes or not? Or else I will do one thing. और भी थोड़ा इजी मेथड से बता देता हूं. Solution number 2. Radius of the circle is increasing, that is dr by dt is given here 3 centimeter per second. How far? Find the rate at which the area of the circle is increasing. चलो ठीक है. If I consider A be the area, if I consider A be the area of the circle, we know area is equal to pi r square. Yes, area of the circle is equal to pi r square. So you have to find the rate of change of area with respect to time t, because here dr by dt is given. So if you differentiate this area with respect to t, this will be pi into twice r into dr by dt. Yes or not? ये आसान हो जाएगा dr by dt because we are differentiating with respect to t. Now since here the value of dr by dt is given, so put the value here, that is 2 into r into pi into dr by dt is 3. But one condition is given that when the radius is 10 centimeter, then find dA by dt. So that means dA by dt at r is equal to 10 centimeter. So 2 into 10 into pi into 3, that is 60 pi. What about the area, unit? Area by time, that is centimeter square per second. So this is dA by dt. You are asked to find the rate at which the area is increasing. So rate at which the area is increasing means dA by dt when the radius is 10 centimeter. जब radius का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा. So यहाँ पे radius का फॉर्मूला का जरूरत नहीं है,
सिर्फ एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सम मोर एग्जांपल्स आई विल डिस्कस नाउ. Let us discuss the next question. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. The length is decreasing at a rate of 5 centimeter per minute, whereas the width y is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. Increasing, decreasing दोनों का वैल्यू दिया गया है. Okay, when x is equal to 8 centimeter, what is x? X is the length, and y is equal to 6 centimeter. What is y? Y is the width. Then find the rate of change of number 1 perimeter. किसका perimeter? Perimeter of the rectangle. Find the rate of change of perimeter. सिर्फ perimeter का value find out नहीं करना है. Rate of change of perimeter. Look at the unit first of all. 4 centimeter per minute, 5 centimeter per minute. What does it mean? Means whenever you are asked to find the rate of change of perimeter, means you have to find dp by dt, because time unit जो है, minute किसका unit है? Time का unit. Means you have to find the value of dp by dt, perimeter with respect to time. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब है dp by dt, नॉट ओनली p. ओके, सो हाउ टू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, सिंस द लेंथ इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 centimeter per minute, means here dx by dt is given, but the value will be negative, which means minus 5 centimeter per minute होगा. माइनस साइन क्यों हुआ? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग. क्वेश्चन में कभी भी माइनस साइन नहीं दिया रहेगा. अगर डिक्रीजिंग बोलेगा तो देन यू हैव टू गिव माइनस साइन. यू हैव टू गिव माइनस. ओके, सो dx by dt is this one. Similarly, the width is increasing, means dy by dt is equal to 4 centimeter per minute is given. dy by dt is equal to, why it is plus 4? Because the width is increasing. इंक्रीज हो रहा है इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीज हो रहा था इसीलिए नेगेटिव वैल्यू लिखा गया है. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट? द पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. सो टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो द फॉर्मूला इज, वी नो इफ p be the perimeter, if p be the perimeter, therefore perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth, that is 2 into x plus y. Okay, but you have to find dp by dt. So dp by dt is equal to 2 is constant, which is 2 into dx by dt plus dy by dt. Okay, so this is equal to 2 into dx by dt is minus 5. Direct we can put the value. dy by dt is plus 4. Put the value. Minus 5 plus 4 is 1. 2 into 1. This is equal to 2. So dp by dt का value आया 2. Don't forget to write the unit perimeter, that is centimeter per second. Now can you tell me whether the perimeter is here increasing or decreasing? Since here in the question both increasing and it is discussed about the both this increasing and decreasing, so that's why I am asking here whether the perimeter is increasing or decreasing. The perimeter of the rectangle is here increasing because the value is positive. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मिला वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए ये बता सकते हैं कि पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. So rate of change of the area of the rectangle का मतलब है, if I consider say A be the area of the rectangle, which means you have to find dA by dt.
लेकिन dA by dt फाइंड आउट करने के लिए तो पहले एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का वो जानना पड़ेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज x इनटू y होगा, बिकॉज हियर x इज द लेंथ and y is the breadth or width, you can say. Okay, so a is equal to x into y. Find out dA by dt, means you have to differentiate this part with respect to t. So dA by dt is equal to u dash v, that is y into dx by dt plus x into dy by dt. Okay, so what is the value of y? Both are given. Y is equal to 6 centimeter. Put here 6 into what is the value of dx by dt? Minus 5. 6 into minus 5 plus what is x? X is 8. 8 into what is the value of dy by dt? Dy by dt, that is 4 only. Okay, so minus 30 plus 32. This is equal to 2 only. So y into the value of y is 6, y into dx by dt. Okay, so this is equal to 2. Now whether the area is here increasing or decreasing, here also it is increasing only because it is plus 2, but don't forget to write the unit. So dA by dt is equal to 2 centimeter square per second. dA by dt is equal to 2 centimeter square. Okay, don't write here second. Don't write here second because here the unit, क्वेश्चन में जो यूनिट दिया गया है टाइम का वही लिखना है. So don't write second, here you have to write minute only. Okay, centimeter per minute and centimeter square per minute. So this is the solution of this question. So rate of change of का मतलब होता है with respect to something, और वो जो होगा depends upon the unit which is given in the question. ठीक है, so rate of change of perimeter का मतलब not only perimeter, you have to find dp by dt. Similarly, rate of change of area of a rectangle means not only area of the rectangle, you have to find the value of dA by dt. So in this way you have to solve. Okay, next question I will discuss now. So let us discuss the next question. The next question is, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. 6y is equal to x cube plus 2. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. जो पार्टिकल मूव हो रहा है वो कर्व का इक्वेशन दिया गया है 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing. Y coordinate is changing बोला गया है. At which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Okay, so read the question properly. You are asked to find the points on the curve. जो पार्टिकल मूव हो रहा है एक कर्व फॉर्म में मूव हो रहा है. You are asked to find the point on the curves. Okay, ये सब पॉइंट जो पार्टिकल मूव हो रहा है कर्व के ऊपर से, वो कर्व के ऊपर का पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. But here one condition is given that the y coordinate is changing, change हो रहा है. Okay, dy by dx का मीनिंग क्या है? Rate of change of y with respect to x. So the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. As fast as the x coordinate. Solution of the first question. So here the equation of the curve is 6y is equal to x cube plus 2. Okay. Y coordinate is changing 8 times. That means dy by dt is equal to 8 into dx by dt is given here. Y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. As fast as the x coordinate. That means the y coordinate is changing with respect to time. Okay, the y coordinate is changing with respect to time 8 times as fast as the x coordinate. Means here dy by dt is equal to 8 into dx by dt is given. You are asked to find the points on the curve. The points on the curve. ठीक है, मतलब points का मतलब क्या है? x y coordinate find out करना है. Okay, so
since dy by dt is equal to 8 into dx by dt, so differentiate this equation with respect to t. So 6 into dy by dt, which is equal to 3x square into dx by dt. That is 6 into, put the value of dy by dt, 6 into 8 into dx by dt. This is equal to 3x square into dx by dt. So dx by dt will be cancelled. So from here if I cancel this one, so x square is equal to 16 और x is equal to plus minus 4. ठीक है, x का वैल्यू प्लस 4 है, माइनस 4 भी है. ठीक है, so when x is equal to 4, what will be the value of y? Put the value of x in this equation. When x is equal to 4, it will be 6y is equal to 64 plus 2. That is y is equal to 11. So 1 point we got 4 comma 11. And similarly, when x is equal to minus 4, if I put here in this equation again, 6y is equal to minus 64 plus 2. That is y is equal to 62 by 6, that is 32 by 3. So the another point is minus 4 comma 32 by 3. Since you are asked to find the points on the curve, so here the points are 4 comma 11 and minus 4 comma 32 by 3. Okay, question is easy only. Question को ठीक से पढ़ना है, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना है. क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ा ठीक से देखना है. बाकी सब ऑटोमेटिक सॉल्व करते हुए आ जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया गया था जो मैं लिखा. उसके बाद बताया गया था कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है किसके ऊपर, डिपेंड करके टाइम के ऊपर. सो इसीलिए dy by dt इज इक्वल टू 8 into dx by dt लिखा. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. सो ये जो dy by dt है, मतलब इसके ऊपर बेस करके कर्व का इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया. उसके बाद dy by dt का वैल्यू पुट करने के बाद x का वैल्यू मिल गया. वही x का वैल्यू फिर कर्व का इक्वेशन में डालना है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस. Read the question properly. This is important question. ये क्वेश्चन बहुत बार आया था बोर्ड एग्जाम में. Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. तो ये वैल्यू और यूनिट को देख के पता चल गया है कि ये वॉल्यूम है. सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये वॉल्यूम का यूनिट है. लेकिन किसका वॉल्यूम, वो अभी नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन. इसका मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो मतलब वॉल्यूम में बोला था, किसका वॉल्यूम है, अभी ये कंफर्म हो गया कि ये कोन का वॉल्यूम है. ओके, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius of the base. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Okay, the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. This is the height of the cone. The height of the cone is always, ये है radius, is 1/6 of the radius of the base. Okay, क्या find out करना है अभी? How fast is the height of the sand cone increasing? How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? मतलब जब h का वैल्यू
4 सेंटीमीटर है तब तब कितना फास्ट हाइट इंक्रीज होगा, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितना फास्ट इंक्रीज होगा या कितना फास्ट डिक्रीज होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू तो कुछ होना चाहिए। हाउ फास्ट द हाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जब हाइट 4 सेंटीमीटर था तब कितना जल्दी हाइट इंक्रीज होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे जाएगा। तो चेंज हो रहा है ना हाइट, तो चेंज हो रहा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कुछ होना चाहिए। वो यूनिट कहां से मिलेगा, वो कहां से पता चलेगा, फ्रॉम द गिवन वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सब वैल्यूज में अभी लिखूंगा। Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. So let V be the volume of the cone, R be the radius of the cone, and H be the height. H be the height, right? Okay, since V be the volume, according to question here, dV by dt is given. So dV by dt is here 12 centimeter cube per second. But the question is, what is the formula of volume of a cone? वो तो यूज करना पड़ेगा ना। So dV by dt is 12 centimeter per second, and we know the value, that is the volume of a cone, V is equal to 1 by 3 pi r square h. This is the volume of a cone. So differentiate both sides with respect to t. क्यों t के साथ differentiate करना है? Because so that we can put the value of dV by dt. So if you differentiate it, so okay, before differentiation we do one thing. यहाँ पे जो सेकेंड थर्ड लाइन में कंडीशन दिया गया है ना, the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, means 1h is equal to 1 by 6 of r, that is r is equal to 6h. Yes or not? Put the value of r here, that is 1 by 3 pi. What is the value of r? 6h. 6h whole square into h. That is 1 by 3 pi into 36 into h cube. This is V. Now differentiate both sides. Now it will be easy to simplify. So now if you differentiate both sides with respect to x, तो ये हो जाएगा 12 pi, because 12 pi is constant, and differentiation of h cube is 3h square into dH by dt. Okay, so this is dV by dt. This is dV by dt. H equal to 1 by 6 of radius, it is given in the question. So वो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने के बाद ही डिफरेंशिएट किया, dV by dt का वैल्यू ये मिला, ठीक है। अभी once again read the last line. How fast is the height of the sand cone is increasing? Height, let us consider h be the height. So height of the sand cone is increasing means you have to find the value of dH by dt. Yes, so ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा? This is say equation number 1. So equation 1 implies, put the value of dV by dt. The value of dV by dt is 12. So 12 is equal to 36 pi h square into dH by dt, or which implies dH by dt is equal to 12 by 36 pi into h square. Yes, so when the height is 4 centimeter, that means dH by dt when h is equal to 4 centimeter, this is equal to 12 by 36 into pi into h square, that is 4 square. So this is, if I cancel this one, this will be 1 by 48 pi. dH by dt is 1 by 48 pi. dH by dt, don't forget to write the unit. Height is increasing with respect to time, which means dH by dt is equal to 1 by 48 pi centimeter per second. Okay, centimeter per second. Since here the unit of time is second, so that's why I have written here second. अगर minute दिया रहेगा तो you have to write minute only. Okay, once again I am repeating this question. The sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second,
and that falling sand forms a cone on the ground. So that means you should know the volume of a cone, which is 1 by 3 pi r square h. Differentiate both sides with respect to t because here dv by dt is given. Differentiate करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उस सब वैल्यू को पुट करना है, because you have to find what, how fast the height of the sand cone is increasing. How fast the height of the sand cone is increasing means you have to find the value of dh by dt. Yes or not? So dh by dt का वैल्यू ये इक्वेशन से मिल जाएगा. When the height is 4 centimeter means when h is equal to 4 centimeter, then what will be the value of dh by dt? वही पूछा गया है. This is important question. So you need to solve more and more questions related to rate measure. ठीक है? This is actually interesting only. This subtopic application of derivatives का ये first part है rate measure. This is interesting only. All the questions are word problems based. So question को ठीक से पढ़ना है. क्या दिया गया है, क्या find out करना है, वो ठीक से देखना है. Okay? So in the next class I will discuss another subtopic of application of derivatives. So thank you for today.